this get-up part. मैंने उनसे बात की, मैंने 3 एक्टर्स सजेस्ट किए कि इनसे करवाएं. मैंने 3 एक्टर्स और लाइक these guys इनमें से 2 थिएटर के थे जिनको मौका नहीं मिला था उस वक्त तक. अब they're on TV. आप नाम नहीं लेंगे इसलिए मैं पूछूंगी नहीं. हाँ नहीं but phenomenal theater actors. I was like ये इन लोगों से करवाएं. Surround them with the big actors. And you will have something nobody's ever done for TV. You will change TV. But I think for understandable reasons, you know, protagonists, you have to sell the drama. And फिर मैंने पूछा, okay, if not these guys, कौन? तो जो बाकी नाम बताए वो different, उसी तरह मेरी तरह different गोरे चिट्टे लड़के थे. Like I'll take the risk, I'll do it. अब मुझे बताएं कि चेचक के दाग का क्या करना है, कैसे करेंगे. बट क्योंकि मुश्किल काम है. और ये इंटरेस्टिंग है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बिकॉज उस वक्त बहुत लोगों ने ये ऑब्जेक्शन रेज की थी कि ओ व्हाई टेक अ गोरा लड़का एंड मेक हिम डार्क, व्हाई नॉट टेक अ डार्कर एक्टर. सो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप कि यू नो आपने सजेस्ट किया था. बिल्कुल. एंड फिर ये हुआ कि मेकअप टेस्ट किए. वो दाग बनाना अंडरस्टैंडेबली टीवी के लिए बहुत मुश्किल है. आपका मेकअप का बजट इतना ऊपर चला जाएगा कि आप यू नो बहुत मुश्किल था. सो मैंने विटिलिगो सजेस्ट किया. विटिलाइगो होता है. एंड मैंने वो उसके भी मेकअप टेस्ट, आई हैव पिक्चर्स. मैंने कहा दिस हैज टू बी समथिंग जो वो कैरेक्टर, बिकॉज वो हमेशा कहता है एक नजर, एंड ही सीज, ही नोटिसेस पीपल सीइंग हिम. And I read the whole thing again, and I realized his issues have to be internalized. Right. It's not external. Because मैं सिर्फ dark skin होने पे एक बंदे की खूबसूरती की नहीं करूँगा. Exactly. The other characters were dark skin. तो मैं उस पे नहीं करूँगा. I will internalize his issues. Right. सारी चीजें मैंने वो दोबारा पढ़ा कि कुछ conflict या contradiction तो नहीं हो जाएगी. नहीं हुई. I was like, I have to change a lot about him. It is all because of society. सारा उसकी source out. और society तो करती है. Victimize source बाहर से है, लेकिन उसका मसला अंदर पकता गया. And इसलिए वो इतना timid, low self esteem इंसान. दिल भी टूटा उसका, धुतकारा भी गया उसका. हाँ, वो तो स्टोरी में हुआ. स्टोरी से पहले तक वो वहां तक जो पहुंचा है और जो वैसा है, I had to build that. And then that is why he was the way he was. In script में थोड़ा सा फर्क था, you know. So I had to internalize all of his issues, and that was the challenge, and I loved playing it. कोई ऐसे practice नहीं की मैंने उसकी. मैं पूछने लगी थी कि what was the method of adapting to that character. आपका generally क्या होता है? Do you look for people in society like that? वो कहीं ना कहीं क्योंकि I was always an observant kid, तो लेता हूँ मैं information हर जगह से, लोगों को observe करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया है और कहीं रहा है. But mainly it was internalizing his who he is. Right. To understanding who he is deep down inside. He's an artist. He's sensitive. He's a poet. Because he's a poet. You know, he loves music. He loves the piano. I love the piano. And मैंने कितने से piano पे सीखा था. A lot of similarities. And he's sensitive. He has trouble expressing so many things that were, you know, parallel to my own personality. And so मैंने कोई practice नहीं की, just read it. The answers are between the lines. Hashim Nadeem had written a phenomenal script. Beautiful character. इतना अच्छा कार्व हुआ था. सारी उसकी philosophy on life, सारी उसकी ideology, सब कुछ अंदर थी उसमें. I just had to internalize. I had to go back to, जब भी कोई सवाल मेरे अपने ज़हन में उठता था, who he is, उसका कहीं ना कहीं script में जवाब था. And I had to recall it. I was like, this is the guy. This is what he thinks. He's plain, simple, straightforward. He just had trouble being who he is, accepting who he is, and which he did up until the last moment. And I love that about the character. Self-discovery पे निकला था. And उसके साथ-साथ उसको circumstances क्या कुछ ending change की. And Hashim Nadeem Saab is amazing. You know, what a guy. We all sat together क्योंकि थोड़ा सा changes थे from the original, and हमने फिर decide किया, मैं
Zahid AD, Shahzad Bhai, the director, Hashim, we would sit while the shoot was going on कि क्या करना चाहिए, and सबने अपना अपना view बताया, and I was like, okay, so the character that I've sort of built, I feel like the only thing that's truly his is Urdu, nothing else. The money, everything else is extra. वो तो आके गिर गया उसके, जो उसका अपना है वो है उर्दू, and he would go back क्योंकि वो एक किसी को मरवाने लगा था, और वही बंदा बनने लगा था जो उसको खुद नहीं पसंद, and he had to step back and he had to rethink who he is because वो परिजाद से दूर होता जा रहा था, the innocence of Parizaad. So he had to step away from all the shohrat, the money, and try to find himself again. Right. And the only thing he could give back is Urdu. So I saw him somewhere far teaching Urdu. And so उस तरह उनको भी अच्छा लगा idea, and उनके भी इस तरह के similar ideas थे, and सब मिल मिला के बड़ा अच्छा बन गया, बहुत अच्छा. Yeah, it was very fulfilling to watch. Yeah. It was, and ended on a happy note. Yeah. बहुत अच्छा था, और पहली दफा बहुत देर बाद एक ऐसा ड्रामा देखा जिसमें of course family drama नहीं था बिल्कुल भी, एक इंसान की passage to self discovery, और वो भी एक बंदे की कहानी. Usually most of our dramas revolve around women and female characters, मगर एक बंदे की कहानी, तो बहुत अच्छा लिखा गया. मुझे although of course similarities किरदार में तो बिल्कुल नहीं होंगी, but appearance को लेके I feel that even शहबाज भट्टी डार्क किया गया आपको जरा सा, उसके लिए भी how has that character been fashioned? बहुत हल्का सा. It's sort of a tan जो सूरज में आप बहुत काम करें तो हल्का सा मामूली सा, तो बहुत it's as if he's working outside non-stop, you know, he's because you know with the type of mustache you have and the slight tan, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यार ये सहाफी कहीं देखा हुआ है. I feel that I've seen this character in real life. So I want to play the story of a common man, right? You know? I want to represent the common man. Absolutely. And हमारे बहुत से परिजाद हैं बाहर, आपके सामने से गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. And but if you stop and talk to them, they've got a story, they've got ambitions, they've got dreams, they've got talent somewhere. So I want to talk to that guy. I want to know who he is. I want to tell his story. So इसीलिए वो जो आपने पूछा कि एक underdog की कहानी है. Most of our people, you know, our majority is a struggling class, and I want to talk about them. आप ये किरदार ना कर पाते अहमद अगर आप 2 3 4 ड्रामे एक साथ कर रहे होते हैं, तो ये भी कॉन्शियस डिसीजन है आपका कि एक वक्त पे शूट कितना 40-45 डेज का शूट होता है, एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं या परिजाद को साल लगा. परिजाद तो खैर एक एक्सेप्शन थी. It was a very tough shoot. It was a tough shoot. Because outdoor थी, so many different characters. And I also want to add कि even though it's Parizaad's story, it's through his eyes is the story of हमारे माशरे की कहानी. Of course. हमारे लोगों की कहानी है. Of course. तो और different phases में जिसमें वो जाता है, वो माशरे को observe करता है, और आपको पता चलता है लोग कैसे इस तरह के इंसान को, प्योर इंसान को कैसे डील करते हैं, कैसे. So बड़ा अच्छा था. I mean the writing is very classic that way. Very, you know, you see short stories of Tom Sawyer, for example. You know, वो वाली कहानियाँ जिसमें एक बच्चा है, उसके थ्रू आप देख रहे हैं. बिल्कुल world building नजर आ रही है आपको. Exposition of other people. There's so many different characters in Parizaad. इतने different लोगों की कहानी और आपको. I felt that Idiot also aspired to do the same. कि इस एक बच्चे के थ्रू आप जिंदगी के जो different meanings हैं उनको देखेंगे, and you learn about life through this child. But do you think it panned out the way that it was expected to? I think बहुत अच्छा concept था. I was sold by the concept. मुझे उस वक्त पूरी तरह स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई थी जब मैं आया था. बेहतरीन concept था. I was sold, but I think exactly वैसा नहीं निकल सका जैसा हम चाहते थे. Having said that, I think kids love it. Yeah, well, a lot of kids. That could be acid/buddy की वजह से. और एक और मैं incentive करने का. I wanted to work with an animal, and absolutely. वो कुत्ता he grew up on set.